यथा संकल्पिता श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः दिव्य तिरुकल्याण महोत्सव पूर्वांगभूत आद्यध्वजारोहण महोत्सव आराधनाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ओम आवाहयामि ओम सुवर्णोऽसि गरुत्ते शिरोगाय यन्त्रत्यक्षतोम आत्मा सामन्तरे तक्षयज्ञाय यज्ञं पक्षन्तं दागस्यज्ञा निधिज्ञा सभाय लोकं सिनर्म सुवर्णं रुद्धान्तिवङ्गच्छ सुवप्पना ततः गरुडमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमोपवीरार्थमक्षदानि समर्पयामि दिव्यश्वेतचन्दनं समर्पयामि कुङ्कुमानि प्रवणद्रव्याणि समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सर्वाभरणालङ्काराणि समर्पयामि यथाभागतः पुष्पैः पूजयामि ओम सुवर्णाय नमः ओम गरुडाय नमः ओम ताक्ष्याय नमः ओम खगवासने नमः ओम महावक्ररुडाय नमः ओम नमः वैकुण्ठमवर्तिने श्रुतिसिन्धुदुरोत्पादमण्डलाय गुरुत्मते ओम गरुडमहिळवेदनीराधिरूढं देहत्तेलनोक्यन्तिराकुण्ठवैकुण्ठवेदे कृतस्कन्धमेले शनिरामदे प्रेतरुद्राजकेतिस्तनाभोगगाढोपगूढपुरत्कण्ठकव्रात आनन्दाचार्यः शीघ्रं स्वीकृत्य धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि फलदेवाञ्जनं शुद्धाचमनाय समर्पयामि नारिकेलफलं स्वीकृत्य शीघ्रातिशीघ्रं गत्वा धूपं తీసుకోండి తర్వాత ఏంటని కూడా మళ్ళీ చెప్పాలి इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधाकृतेपदं समूढमस्य वामं सुरे नमः पर्णगणस्थाय वैकुण्ठवटवर्तिने श्रुतिसन्दुसुरोत्पातमण्डलाय गरुत्मते ओम सुवर्णादि गरुत्मान् त्रिवृते शिरोगाय यत्रचक्षुस्तोम आत्मा सामते तनोर्वामदेव्यं बृहत्तरन्तरे मक्षोयज्ञाय यज्ञं पुच्छन्दागस्यङ्गाने तिष्ठया सभाय जलमोषनाम सुवर्णादि गरुत्मान् दिवङ्गच्छ सुवप्पथ श्री गरुडदेवताभ्यो तदस्तपदेवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारान् सकलोपचारान् समर्पयामि ततः धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अत्रोपस्थिता फलोपहार गरुडनैवेद्यं समर्पयामि అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి